Prime Minister Narendra Modi is all set to push the political envelope in Bihar with a mega rally in Gaya today. The BJP is attempting to woo voters ahead of the upcoming assembly polls, and a war of words has already started between the major political parties in the state. JDU has launched an audio campaign directly targeting the Prime Minister, terming him a Jumla Babu, a magician with words. Chief Minister Nitish Kumar particularly did not mince words, hitting out at Narendra Modi, calling him a casteist, saying all that the Prime Minister did was to make big promises and failed to keep them. वो बार का यहाँ का ही रहा है, तो उन्होंने पूछा तो हमने कहा मुझे जानकारी नहीं है, और अब तक की जो परंपरा थी उसके हिसाब से जो बातचीत करनी चाहिए थी माननीय गृह मंत्री जी को, कोई बातचीत नहीं हुई है, मैंने इतना ही कहा। आज हम देख रहे हैं कि बीजेपी के लोग जो गवर्नर आए हैं उनको दलित और इन चीज़ों से जोड़ रहे हैं, मतलब कास्ट आइडेंटिटी उनकी बता रहे हैं। अब इससे इनकी मंशा पता चलती है। मैंने तो किसी व्यक्ति विशेष पर कुछ कहा ही नहीं है। मैंने तो यही कहा है कि अब तक की परंपरा मुख्यमंत्री को जो मुख्यमंत्री से बात करने की या मान लीजिए जानकारी देने की रही है, उसका भी निर्वहन नहीं हुआ। मैंने तो सिर्फ इतनी बात कही। और देखिए, पहले से पूरी तैयारी है, यानी हर चीज को जाति के नजरिए से ये देखना चाहते हैं। तो बिहार की राजनीति को कहां ये गड्ढे में ले जाना चाहते हैं, इसी से पता चलता है। गवर्नर के पद पर कोई भी मनोनीत हुए हैं और गवर्नर का पद धारण करेंगे, वो बिहार के राज्यपाल होंगे, महामहिम राज्यपाल होंगे, वो कोई जात के नेता नहीं होंगे। और जिस प्रकार से डिस्प्ले करने की कोशिश की गई है, यह उनकी कुत्सित मानसिकता का परिचय है। बिहार की राजनीति को जो विकृत करने की उनकी योजना है, यह उसका प्रकटीकरण है। मैंने तो अपॉइंटमेंट के सिलसिले में जो जानकारी दी जाती है उसके बारे में कहा मुझे नहीं जानकारी दी गई, और वो भी पूछने पर मैंने कोई सुओ मोटो वक्तव्य नहीं दिया। एक होता है कि अपने आप कोई बयान जारी करना, आप लोग जैसे अभी निकल रहे हैं, पूछ रहे हैं तो बता रहे हैं। अगर कुछ नहीं पूछते तो हम अपने निवास पर जाते। मैंने कोई सुओ मोटो स्टेटमेंट नहीं दिया। पूछा तो हमने कहा भाई मुझे जानकारी नहीं थी। इतना लोगों में जोश है, उत्साह है कि ये रैली अद्वितीय और ऐतिहासिक रैली होगी। मगध की धरती पर आज तक इतनी बड़ी रैली नहीं हुई होगी, उतनी बड़ी रैली होगी। बिल्कुल तैयारी पूरी हो चुकी है। पूरे जगह से अपार जनसंख्या में लोग जुटेंगे इस रैली में और अपना आशीर्वाद और समर्थन देने को आतुर है। Rohit Singh, our correspondent, is now joining us with more details from Gaya. Rohit, first of all, with the JDU coming down heavily on the BJP and the Maoists having called for a day-long strike, how's the BJP prepared for today's rally? Well, Maha, preparations are all done at the Gandhi Maidan in Gaya, where I am standing at this point of time. If I could ask my camera person to show that all the preparations have been done. This is the stage where the Prime Minister, in fact, if I can ask my camera person to just show this way, this is the stage that has been prepared for the Prime Minister's rally, and security is of paramount importance here, because just ahead of the rally, the Maoists has given a call for observing a black day today to protest the Prime Minister and the central government, and that is why after that security has been heightened, and 3 layers of security. The Bihar police will be in the outer layer, the inner layer will be of the CRPF commandos, and the innermost will be of the SPG. So massive security deployment has been put in place, and this is the second rally that is going to take place of the Prime Minister. And the importance is that this is the area from where former Chief Minister Jitan Ram Manjhi comes, and this is where the Mahadalit vote bank is also there in large numbers, and that is why when the Prime Minister will be addressing the people here, obviously his eyes will be on that 20% Mahadalit vote bank in the state. Rohit, Nitish Kumar has already termed him a casteist by his comments that he made earlier on in another rally when he was there in Bihar. So how is Prime Minister Modi expected to deal with the rally today as far as the announcements that he's likely to make and the references in his speech?
Well, the DNA comment you are referring to, Mahad, obviously in the last 15 days, the DNA controversy has been completely volatile in Bihar. After the Prime Minister made that speech where he called Nitish Kumar, the DNA of Nitish Kumar was not good, and the politics has been really simmering in Bihar. And today it will be very interesting to see as to what does Prime Minister say on that issue, because Nitish Kumar a couple of days back has written a letter to the Prime Minister where he's raised objection to the DNA controversy, and he had demanded that the Prime Minister must take back his statement. So really all eyes will be on the Prime Minister as to does he make any reference to that DNA controversy that is going on between Nitish Kumar and the Prime Minister. All right, Rohit Singh, many thanks for getting us all those details. Rohit is at Gandhi Maidan in Gaya. He'll be getting us all the latest updates as the rally starts.